Hi friends, welcome back. Amid Canada tension, Jaishankar takes a subtle dig at Trudeau. वाह, चलो देखते हैं. क्योंकि अच्छा ये मेरे ख्याल से वहाँ गए थे ना, यूएस से जब गए तब शायद वहाँ पे किया होगा. देखते हैं क्या है, वहीं किया है कि कहीं और जाकर इन्होंने कोई बातचीत की है. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. मैं तो कहती हूँ किसी को भी कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ट्रूडो के बारे में कुछ करने की, क्योंकि वो खुद ही अपना मजाक उड़वाई जा रहा है. वो खुद ही ऐसे काम करता जा रहा है जिससे एक के बाद एक उसकी जो है कहते हैं ना फजीयत हो रही है. चलो शुरू करें. Canada has made another serious blunder. On Friday, the Canadian Parliament welcomed a guest. Oh, I'm not ye bhi talking wahi. about Ukrainian President Zelensky, although he too was a guest. I'm talking about this man, 98-year-old Yaroslav ये न्यूज़ Munka. हो गया हर जगह ही. He was a special guest. Canadian lawmakers and Zelensky celebrated him. They gave him a standing ovation. The Canadian speaker called him a war hero. Today, he's sorry for using those words. Because this man is not a war hero, he's a Nazi. And the Canadian government has egg on its face. The same Canada that claims to have credible intelligence about India कैसे couldn't यूं यूं figure कर रहा है out जैसे that पता there नहीं was क्या a तीर Nazi मारे in their हैं इसने. midst. Tells you a lot about Canadian sleuths and their abilities. They say they've intercepted communications, exchanges involving Indian diplomats, and that the US has provided more information. But it's all top secret. They still haven't shared any of this proof with the वही तो. world. What about naming Nijjar's killer? Or investigating Khalistanis, or cracking down on their separatist campaign, or probing their links to terrorists? What has Canada done on this front? Dragging their feet and living in denial, that's what they've done. But it seems India is not waiting anymore. New Delhi is going after Khalistanis and their sympathizers in India. Raids are being conducted, properties are being seized, and there are plans to cancel OCI cards. These are cards granted to people of Indian origin to give them better access to India. But Khalistanis won't have them anymore. Like I said, it's been a busy weekend for the Indian security establishment. They conducted multiple raids. A house and some agricultural land was seized. This was in the Indian state of Punjab. These properties were owned by a man called Gurpatwant Singh Pannu. He's a Khalistani. He leads a group called SFJ, Sikhs for Justice. SFJ, it's a banned outfit in India. Pannu himself was declared a terrorist by India in the year 2020, and for good reason. He's the face of SFJ. He regularly features in their videos, making hateful comments, threatening the Indian leadership and challenging India's sovereignty. Last month, Pannu led a rally in Canada. He raised the killing of Hardeep Canada Singh mein kya hua Nijjar. hai? He called for the political assassination of Prime Minister Modi and his team. Nijjar was shot in the month of June. He was shot dead. He too was a Khalistani and a designated terrorist. Canada has launched a diplomatic war with India over his death. Their Prime Minister Justin Trudeau spoke about it in Parliament last week. He said, there's an Indian hand in the murder, although he hasn't given any proof yet. Neither has his government. There is limited information in the public domain, and most of it comes from selective leaks. The Canadian establishment is planting stories in the Western press. These reports claim that Canada has intelligence intercepts, but they do not get into the specifics. As for India, it denies all the allegations and it has been asking for proof. बिल्कुल. But this is a dangerous game. You see, Justin Trudeau is fanning the dying embers of Khalistan. His words and actions have infused life into the separatist campaign. They want to break India up, to form a separate state called Khalistan. And this movement has a violent history. It led to the assassination of a sitting Indian Prime Minister. It also led to Canada's worst terrorist attack, the bombing of a civilian plane. But while India sees this as a national security threat, the Canadian government sees Khalistanis as a vote bank. They will not crack down on these separatists. Not just vote bank, उसको पैसा So बहुत India मिल is रहा है doing the इनसे. needful. After seizing Pannu's property, assets of other Khalistanis have also been identified. Good. They're based not just in Canada, but also in the UK, the US, and Australia. Their properties could be seized too. And India could go after their OCI cards. OCI stands for Overseas Citizenship of India. An OCI card
is a form of permanent residence. रेड वाले में क्या These लिखा are है? given to non-resident नहीं, वो Indians UK or बुक है। NRIs. If you have an OCI card, you can travel to India without a visa, stay here indefinitely, and even work here. Now, reports say India plans to revoke such access to I can stay Khalistanis, so they won't be able to indefinitely travel and to I can India. work there. Okay, There bye is no bye. official मैं इंडिया आ रहा confirmation हूँ. on this yet, but last week New Delhi cancelled visa services to Canadians, so the OCI move may follow. Reports say dozens of OCI card holders are on New Delhi's radar. They face the risk of losing their cards. India is taking a strong position on this. External Affairs Minister S. Jaishankar is in New York. He gave a statement, and the statement has raised eyebrows. Listen to what he said. I think more than political will, there is political pressure for a change. There is growing sentiment in the world, and the global south, in a way, embodies it. But there's also political resistance. They will all mouth the right things, but the reality is still, today, it's a world very much of double standards. Now, this is being Very deep seen as a meaning, dig isn't it? at Justin Trudeau. He remains adamant about taking on India. But some of his ministers are taking a softer line, like Bill Blair. Bill Blair is the Defence Minister of Canada. Yesterday, he spoke about Canada's ties with India. He called it an important partnership. Let me also quote from what he said. We understand that this can be and has proven to be a challenging issue with respect to our relationship with India. Blair said Canada will continue its investigation into the killing of Nijjar. At the same time, it will pursue partnerships in the Indo-Pacific. इसी का भी So is हमने there a सुना था division of दूसरे sorts वीडियो में. in यही था Trudeau's वो team? बंदा क्या? Or is the ground being prepared for some kind of truce? Yes. Reports say there is talk of a back channel in Washington, D.C., of the US trying to broker peace. We'll be keeping a close eye. तो भैया देख लो क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं. और वही मैं कह रही हूँ कि जैसे चाइना ने सोते हुए शेर को जगाया था ना, वैसे अब कनाडा ने काम किया है कि सोते हुए शेर को हम, जो कि हम कौन है, मोदी जी और भारत, उसको जगा दिया है. अब जो जो एक्शंस इनके ऊपर हो रहे हैं उससे अब इनको भी समझ नहीं आएगी हमारे साथ हुआ क्या है. अभी देखा नहीं है कि उन्होंने पोस्टर्स बोला है कि जो भी डाल रखे हुए थे कनाडा में पहले, जो इतने टाइम से थे, तब इनको कोई नहीं दिख रहा था कि ये पोस्टर्स जो है गलत है, इनको हटाना चाहिए. अब वो हट रहे हैं. ऊपर से इन्होंने जो सुनने आया, एक और न्यूज़ में था कि सिक्योरिटी जो है हमारे पूरे बैरिकेड्स करके सिक्योरिटी इंक्रीज कर दिए. जो पहले हम बोलते रहे कि भैया दो सिक्योरिटी हमारे एम्बेसडर्स को, हमारी एम्बेसी को, तब कुछ हो नहीं रहा था. तो अब वो कर रहे हैं. जो नॉर्मल चीज़ें करनी चाहिए थी उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम थी. सोचो ये कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही थी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा. और वो पन्नों की कितनी चीज़ें कॉन्फिस्टिकेट कर रहे हैं. और बाकी जो इतने सारे, देखिए अभी भी कनाडा में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स वो इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगी. बिल्कुल. उनका ये कहना कि इंडिया जो इमर्जिंग पावर है एशिया में, ये गलत था. उनको कहना चाहिए था इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड है. एशिया का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी तुम्हारी इकोनॉमी से भी बड़ी है. तुम 2 ट्रिलियन हो, हम तो 3.75 ट्रिलियन. मुझे लगता है ये तुमसे दुगनी हमारी इकोनॉमी हो रही है. कंट्रीज है ना, उनको वो एशिया और एशिया के एरियाज को इंफीरियर समझते हैं कि इंडिया बड़ा इमर्जिंग पावर है एशिया में. अबे मेरे भाई, एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में होगा. तुम्हारे से दुगनी हमारा जीडीपी है. अभी देखो 3 साल वेट करो, तब नंबर 3 हो जाएंगे. फिर तुम G7 बोलते फिरना, और वो लोग बोलेंगे तुम टॉप 7 में, आधे लोग तो टॉप 7 में नहीं है. क्या G7 अपने आप को बोलते फिरते हो? और उस टाइम तक ये लोग और डूबेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतने गलत डिसीजंस लिए. जिस टाइप के लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, इनको पता नहीं कंट्री में कितनी प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की आएंगी. अभी तो वेट करो कुछ और सालों में. इनको पता नहीं है ये क्या कितना बड़ा गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ की, जिसको बाद में ये सॉल्व करना भी चाहेंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगी. ये कंट्री डुबा देंगे अपनी इन मेन गलतियों से. तो भैया शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.